Hello guys, welcome back to the channel. I am Sayan Kumar here and today we are going to learn the chemical substances and processes balancing the chemical equations, and we will also do the question answer. So be ready for the answers. So let's start. So first, we have completed about our atoms and molecules, pure substances, compound also element that are they are divided. Pure substance is divided into two parts, that are elements and compounds. Chemical symbols we have learned, and we have also learned chemical formula, how to write a chemical formula, and we have also learned about ions. What are ions? The substances that are made up of positively and negatively charged particles are known as ions. And we have also learned the symbol of ions, and we have also learned how to write the chemical formulas and chemical changes also we have learned. And we have done this activity also. We have learned chemical equation, water chemical equation, and we have also learned chemical reaction and what are reactants and products. So yesterday's class we were learning that the letter S is used to denote solid state, and the letter S is used to denote the solid state, and the L for liquid, and G for gas, and AQ for aqueous solution. Aqueous solution. What is aqueous solution? A solution of a substance in the water. So now we will learn balancing of chemical equations. So let's start. Balancing of chemical equations. A chemical equation should be balanced. तो हमें chemical equation को balance करना चाहिए. A balanced chemical equation is that in which the number of atoms of each element are same on both sides of the equation. तो balanced chemical equation क्या होता है? जिसमें द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो एक दो वो रिएक्टेंट्स में भी सेम होना चाहिए वो एटम्स, और प्रोडक्ट में भी सेम होना चाहिए एटम्स. किसका? वो ईच एलिमेंट. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन. यहाँ पे हाइड्रोजन का देख रहे हैं H2 एटम्स, तो यहाँ पे भी H2 एटम्स, प्रोडक्ट में भी H2 एटम्स है और रिएक्टेंट्स में भी H2 एटम्स. तो अभी उसके बाद चलते हैं. हमने समझ लिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है. उसके बाद देखते हैं एक अगर हमें उस एटम्स के नंबर्स को बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करते वक्त हमें उस एलिमेंट का नाम चेंज नहीं करना चाहिए. नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं. जैसे H चेंज करने की ज़रूरत नहीं, या फिर O चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इधर ऑक्सीजन या फिर H. तो यहाँ पे इंस्टेड अ सुइटेबल कोएफिशिएंट नंबर इज रिटन बिफोर द फॉर्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस. तो क्या किया जाता है? एक कोएफिशिएंट नंबर, जैसे मैंने H2 लिख दिया, हाइड्रोजन हो गया. फिर अगर मैं 2 लिख दूँ यहाँ पे, तो 2H2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4. तो ये 2H2 इक्वल टू 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, so now let's see the next line. Instead a suitable coefficient, so we have seen that for example reaction between hydrogen and oxygen gas gives water. तो ये जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है, इक्वेशन है, तो इसको अभी हम बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक नोट्स का एक PDF मिल गया है, तो यहाँ पे मैं अपना नोट्स यहाँ पे लिख दूँगा. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है H2 plus O2 that gives us H2O. तो H2 plus O2 gives us H2O. So यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं हुआ है. आप चेक करिए कि H2 इधर है, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए H2 इधर H2. 2 atoms of hydrogen in the reactants is equal, so it is same 2 atoms of hydrogen in the product also. But in the oxygen side, 2 atoms of oxygen, but here there is only 1 atom of oxygen. So now what we will do? So we will write this as H2, it will be same, plus O2, this is also same. Then we will add a coefficient. Remember to add a coefficient. याद रखिए coefficient डालने से ये जो 2 है ना, मतलब सोचो इंटू हो रहा है इसके साथ 2 इंटू H2O,
और ये 1 है इसका एटम, तो क्या हो जाएगा 2, इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो गया, पर एक प्रॉब्लम हो गया। क्या है वो प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 आइटम है, पर यहाँ पे तो 4 है, तो इसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे हम लिखेंगे अगर 2H2, तो 2 इंटू 2 मैंने बोला था, मैंने कोफिशिएंट लिखा था 2 इंटू 2 4, अभी 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम चलते हैं हमारे पीडीएफ की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या किया गया है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले इधर हम रखे हैं, इधर 2 इंटू हुआ है, तो 2 इंटू 2 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे पर यहाँ पे तो 2 एटम्स है, तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल है। अभी मैं एक सॉल्व करता हूँ और दूसरा वाला आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं इसको लिख दूँगा। तो यहाँ पे है Na प्लस Cl2 गिव्स अस NaCl। तो ये पहले से बैलेंस हो गया है, इसीलिए ये नहीं दिखा रहा। हाँ, इसका पहला इक्वेशन नहीं दिखा रहा, जिससे वो यहाँ से पता चल रहा है कि अब अभी बैलेंस होके है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वो वाले फॉर्म में रखता हूँ जब ये बैलेंस होके नहीं था। तो ये असल में है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का Na प्लस क्लोरीन का Cl2, इट विल गिव अस सोडियम NaCl। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो इधर तो Cl2 है, Cl2 एटम्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए Cl2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे पर 1 एटम ऑफ फ्लोरीन। तो इसको अभी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा Na प्लस Cl2 दैट गिव्स अस 2NaCl, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। इसके साथ साथ 2 एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं था, पर यहाँ पे सोडियम अभी 1 एटम हो गया। तो सोडियम यहाँ पे क्या हो गया, 1 एटम हो गया। तो अभी हमें इसको 2 एटम्स करना पड़ेगा। तो 2Na सिंपल है, 2NaCl2 gives us 2NaCl. This is a balanced equation. तो ठीक है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब चलते हैं हमारे पीडीएफ की तरफ। दूसरा वाला आप सॉल्व कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ वो वाला। तो ये है हाइड्रोजन सल्फेट और NaOH। तो पहले रिएक्टेंट्स का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड इंक में। H2SO4 फिर प्लस NaOH प्लस सोडियम oxygen hydrogen, that is known as hydroxide. So this gives us sodium 2 atoms, then SO4, Na2SO4 and plus H2O. Now you solve and tell me the balance equation in the description. तो अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? Chemical reactions can be classified into different types. It can be classified into different types. तो what are chemical reaction?
So the chemical changes that cause one substance to change into another is known as chemical reaction. तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उस रिएक्शन के टाइम में कौन सा केमिकल चेंज होता है वो हम देखेंगे. पहला वाला 4 हमारा दिया गया है. पहला वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब तो सब इधर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बाइन होता है. दो रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन होके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं. वहाँ पे लिखा भी गया है अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, combine to form a new substance that is known as product. So that is called a combination reaction. तो यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्टेंट्स. 2 रिएक्टेंट्स जैसे मैंने ले लिया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहले से दिया गया है. हाइड्रोजन 2H2, तो बैलेंस हो गया है ना, तो प्लस O2 gives us 2H2O. तो यहाँ पे क्या है 2 रिएक्टेंट्स दैट आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म 1 न्यू सब्सटेंस. सो न्यू सब्सटेंस इधर वाटर, नया, एकदम नया, क्योंकि ये दोनों तो गैस था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस था, वाटर क्या है लिक्विड. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस यील्ड्स अमोनिया गैस. तो नाइट्रोजन एक गैस था, हाइड्रोजन गैस था, अमोनिया भी एक गैस था, पर ये अलग अलग गैस है. नाइट्रोजन एक गैस था N2, हाइड्रोजन एक गैस था H2, बट यहाँ पे बैलेंस हो गया ना, तो 3H2, तो इट विल फॉर्म NH3 बट इट्स बैलेंस, सो 2NH3. Now let's go to decomposition reaction. Decomposition reaction एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे एक सिंगल रिएक्टेंट से. तो मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको मैं दिखा देता हूँ. तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, उसी को लूँगा पर उल्टा करके. अगर मैं उल्टा करके लूँगा, यहाँ पे H2O मीन्स 2H2O gives us H2 plus O2 means it gives us हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया. अभी मैं अगर हम वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन वाटर if electric current is passed, then it will form 2 hydrogen and oxygen. ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप समझ गए. डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज होना, ब्रेक होना. जैसे मतलब एक रिएक्टेंट से 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है लाइमस्टोन, दैट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट. सो इट इज Ca कैल्शियम कार्बोनेट CO3, एंड व्हेन इट इज हीटेड अप it gives us quicklime, that is calcium oxide, so CaO, plus it gives us carbon dioxide, that is CO2. अभी तीसरा वाला देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. A chemical reaction in which one element displaces another in a compound is called a displacement reaction. डिस्प्लेस होना. एक केमिकल रिएक्शन में जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को, एक कंपाउंड, वो एक एलिमेंट, सोचो एक एलिमेंट वो अलग चीज़, एक एलिमेंट ये अलग चीज़ है, और यहाँ पे एक कंपाउंड है, एक सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन, उसमें कोई अलग चीज़ एक और एलिमेंट डिसॉल्व हुआ है, पर जब ये एक एलिमेंट इधर उधर जाएगा तो वो उस एक एलिमेंट सॉलिड को निकाल के ले आएगा. तो अगर सॉलिड डिसॉल्व हुआ होगा तो वो निकाल के ले आएगा, वो एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा उसको उस पोजीशन से, और वो खुद वो पोजीशन ले जाएगा. तो यहाँ पे वो जो एक्टिविटी दिया गया है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिया गया है उस एक्टिविटी में. तो उसने क्या किया है, एक बीकर लिया है,
ठीक है, बीकर, जिसमें उसने कुछ क्रिस्टल बॉल्स डाले हैं, किसके ना, कॉपर सल्फेट्स। तो कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो उसने क्या किया, 50 ml पानी डिज़ोल्व कर दिया, कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व कर दिया और ये सॉल्यूशन हो गया, मतलब AQ हो गया। फिर क्या किया, आयरन नेल, एक आयरन नेल ले लिया और उसमें डिप करके रखा। तो उसको उसने डिप करके रख दिया इस सॉल्यूशन में, सॉरी इसको यहाँ पे डिप करके रख दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 के 10 मिनट के बाद जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, फिर वो क्या बन गया, ग्रीन कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। क्यों, क्योंकि वो जो आयरन नेल उसमें गया, आयरन का क्या है Fe, तो मैं यहाँ पे साथ साथ वो केमिकल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, Fe प्लस CuSO4, वो सॉल्यूशन AQ का, तो Fe सॉलिड, CuSO4 इज अ AQ, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जब आया तो आयरन नेल की जो वो सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर का हो गया। तो क्या देता है ये देता है हमें, इट गिव्स अस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। वेयर डज कॉपर गो नाउ, सो कॉपर अभी कहाँ चला गया, कॉपर अभी आयरन नेल के ऊपर आ गया एक ब्राउन कोटिंग की तरह, वो अभी एक सॉलिड हो गया, और आयरन नेल इधर एक हो गया एक्वा सॉल्यूशन, सॉरी एक्वा सॉल्यूशन, और उसने क्या दिया, उसने दिया कॉपर जो कि सॉलिड। तो यही चीज़ लिखा गया है इधर, अब देख लीजिए। तो यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी फोर्थ वाला देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एसिड और बेस मिलके एक प्रोडक्ट, एक सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे वो ही लिखा है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट एंड वाटर, इट्स ऑलवेज गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, NaOH aqueous solution, and hydrochloric acid that is also aqueous solution, HCl. It gives us salt, NaCl that is sodium chloride and water. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दैट इज अ सॉल्ट, वो एक्वा सॉल्यूशन, और वाटर बन गया H2O। तो H, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया वाटर। द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और सल्फ्रिक एसिड इट गिव्स अस मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज अ सॉल्ट एंड वाटर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 दैट इज अ एक्वस सॉल्यूशन, और किसके साथ मिला, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, फिर वो फॉर्म किया मैग्नीशियम और इधर SO4, तो वो हो गया एक्वा सॉल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज अ सॉल्ट। एंड हियर वी गेट 2H2O वाटर। व्हाई 2H2O? बिकॉज हियर इज 2 atoms of hydrogen and it is in bracket. Remember, it is in bracket. This is hydroxide. It is in bracket, then hydrogen is 2 and oxygen is also 2. Oxygen is also 2. Remember that. The 2 oxygen, then here it is 2 and here it is also 2. Then here there will be 4. To 2 to 4 atoms of hydrogen here and 2 atoms of oxygen. Now we have completed the chapter successfully. Now you must be waiting for the answers, question answers. So I have written. So let's solve the A, B and C. Then I will show you the D, E. Materials made up of same kind of particles are called, the materials that are made up of same kind of particles we also know. So I am just writing because I am sure that you have watched my first part of the video and you have learned. Now let's go to the second bit, the type
The type of and number of particles of each kind present in a substance is given by its तो atom. Why? So अगर मैंने लिखा H2, so how many atoms are this number is what is this number called? 2 atoms of hydrogen. Simple. Now let's go to the third question. Chemical formula of water. We already know H2O, hydrogen and oxygen. Iron gets rusted on coming in contact with air and moisture. That we also know. Air and moisture. The process that leads to a chemical change is called a chemical reaction. I have said that in this video also and in previous video also. And now let's see the sixth one. In a neutralization reaction, dash and dash are formed. Dash and dash are formed in a neutralization reaction. What are they? Sorry. So they are salt and water. Yes. Now let's go to the bit B. Write true or false for the following statements. All matter is made up of atoms. All matter is made up of atoms. That's true. In the first page we have learned compounds are substances consisting of two or more elements chemically combined in a fixed ratio. That's also true. Third one, the symbol of element copper is Cu. Why Cu? Why not Co? Because the chemical name of copper is different. It's starting from Cu. So that's why. Now let's go to the fourth one. Formula of sodium chloride is written as ClNa. It's wrong. It's false. Why? Sodium chloride. Sodium is a positive one, Na plus, that is only one atom, and chlorine is a negative one, and Cl minus only. So minus 1, and here plus. Sorry, it will be not in the bottom. It will be in the top. Plus 1. Okay. This is sodium with one atom and chlorine with one atom, but it is positively charged. Sodium is positively charged and chlorine is negatively charged. So formula of sodium chloride is written as ClNa. So ClNa. It's wrong because we have learned in the property that the positive will be first. So it must be NaCl, sodium chloride. From the name you can see, and you can say sodium is first, then chlorine. Okay, so this will be false. Now let's go to the fifth one. The chemical formula of aluminium sulfate is this. No, this is wrong. Why? Because let me go to the notes then show you. Here, aluminium sulfate. I think it's said aluminium sulfate or what? Yes, aluminium sulfate. So if I will write Al3 plus aluminium Al3, we do not need to write the 3 plus, and if I will write SO4, okay, SO4 2 minus, so I will only write 2. Now interchange, this will go here, this will go here, and this must be in bracket. Okay, so Al2, aluminium will be 2 atoms, and SO4 will be 3 atoms. So this must be the chemical equation, but here it is written that Al2 SO4 only. There must be a 3 over here, okay, and a bracket. Okay, so this is a false. New substance formed in a chemical reaction is called product. Yes, it's true. Magnesium hydroxide is an acid. It's false. Magnesium hydroxide, I have said, it's a base. So how will write MgOH? Okay, this is magnesium hydroxide and it's a base, so it will be false. Now let's go to the tick the correct option. The chemical symbol Ag represents the element silver. These are very easy. One molecule of nitric acid is made up of one atom of hydrogen and one atom of nitrogen and 3 atoms of oxygen. You can reference to the 4th page. There the answer is written. The chemical formula of magnesium phosphate. So I am so let me tell you magnesium phosphate. Okay, so just wait.
let me just take it down. Yes, magnesium Mg2 and phosphate PO4 3. So 3 minus and 2 plus. So first will be a magnesium, obviously, then 3 will go here, then 2 will go here, then it will be written as Mg3 and PO4 2. Let's see. Okay, in this third option, Mg3 PO4 2. Magnesium phosphate is written as Mg3, magnesium 3 atoms, and phosphate 2 atoms. Now let's go to the following reaction. Is an example of a, so this was in that example, also in the displacement reaction example, Fe. So iron is mixed with the copper sulfate solution, and it gives us iron sulfate solution, and also we get copper in the solid form. So what will it be? The iron takes place the copper place, so it will be so iron displaces the copper place and takes place of the copper. So this will be a displacement reaction. The chemical formula of quicklime. Quicklime was also known as, calcium oxide. Calcium oxide, how it's written? CaO. So this one is the answer. So if you want to check, so let's check is this answer is correct. In this page, yes, quicklime is CaO, that is solid. Okay, now let's go to D. Okay, answer the following in brief. What are elements? So here I have written all the answers in my hand, and I will give you the PDF in the description, so you can access to this by going to the description. So first answer is, so here by some problem it's cut, so don't worry, I will send it in the description. What are elements? So elements are the pure substances. Elements are the pure substances which is made up of atoms of the same kind. Remember this, not atoms or molecules of the same kind. That will be the pure substances, and made up of molecules of the same kind, so that will be compound. Atoms of the same kind will be element. The element is a pure substance which is made up of atoms of the same kind. So atoms of the same kind. So here atoms, it will be there. Now let's go to the second question. I think second question is easy. Give the chemical symbol of iron and chlorine. Yes, chemical symbol of iron and chlorine. We do not need to write the ion symbol, chemical symbol. Remember, the chemical symbol of iron is Fe and chlorine is Cl. Remember this. These symbols are there are 18. Then there will be 118 symbols are there total. In total, we have to remember that there is no formula to check and see and tell the answer. Write the chemical formula of following compounds: aluminum oxide and zinc acetate. So here I have written aluminum oxide, Al3 plus and O2 minus. So the minus signs will be not there, minus plus signs. So if it will go here, it will go here. Then Al2 and O3, Al2O3. This is of aluminum oxide. And zinc acetate will be, first let's take the zinc one, Zn2 plus, so I will not write 2 plus, CH3COO minus only, means 1, only 1. We have to not write, we have to not consider 1. Okay, so what we can do, we can also write Zn1 CH3OO and 2. This will be interchanged, no? So that's it. Or we can cut this one, because there is no needed of subscript 1 in the chemical equations. Let me erase all this, because the
written notes are here. Okay, so now let's see the, let me show you the answer. Fourth question, balance the following equation with this one now I will do, because this is an important question. CaOH2 plus HCl gives us CaCl2 plus H2O. So we have the question CaOH 2. So CaOH2 plus HCl, that gives us CaCl2 plus H2O. Now let's balance this. First let's see Ca, calcium and calcium 1 atom. Okay, it's right. Then here hydrogen is 2 atoms, here hydrogen is 2 atoms, oxygen is 2 atoms here. So we have to do that 2. So to do it 2, and here you do not forget that this is H. So here also there is H, but here first let's see Cl2 plus H2O. We will also add 2. Then 4 atoms of hydrogen, and but here it is 3 atoms of hydrogen. See, 3 atoms of hydrogen. How? H2. Then here 1 atom of hydrogen and 2 atoms of hydrogen, that will be 3 atoms of hydrogen. Now we have to convert it 4 atoms. So how we will do? Here is 2, then I can do here also 2, then it will be CaCl2 plus 2H2O. Now but chlorine is now 2, and here also chlorine is 2. So now the chemical equation is solved. So let's see what was my answer over here, that I will give to you. Okay, so CaCl2 plus H2H2O. That is the balanced equation. So let me see, is this correct with this? Okay, so this one, then this one. Okay, so these two both are correct. Now let's go to, what does a chemical equation represent? What does a chemical equation represent? What is a chemical equation? Just write that. The representation of a chemical reaction using symbols and formula of substances involved in the reaction is called a chemical equation. So these are the answers in just writing, but we have to not do any equation, or we have to not write any symbols. What are reactants and products in a chemical reaction? Reactants are substances which undergo a chemical change, in which a reactant in a reaction are called the reactants. The reactants are like, these two are reactants and these two are products. Okay, now let's see the new substances which are formed. So these are the products I said, which are formed by the reactants are known as products. Okay, now let's go here. Give one example of a combination reaction. Combination reaction, simple example, water. Example of water. You must balance it first. First balance it, then you will write like this. Okay, now let's go to E part. So we have completed the D part. Let's go to the E part. Write the steps involved in writing the chemical formula of calcium phosphate. How to write calcium phosphate? So how to write calcium phosphate? Let me go here and show you. Calcium phosphate, Ca and Ca okay, so Ca2 and here PO4. Okay, good. So here we will interchange the values, then it will be Ca3, then PO4, and then 2. Okay, so this must be the answer, Ca3, PO4 and 2. Okay, so this is correct. Now let's go to the E second part. How is a chemical change different from a physical change? How is a chemical change different from a physical change? In a chemical change, a new substance is formed.
Remember, in a chemical change a new substance is formed, but in physical change a new substance is not formed. But in a chemical change a new substance is formed, whereas in a physical change the substance may undergo change in its physical state or shape or size or color, but it does not change into a new substance. That's why chemical change is different in physical change. In a chemical change a new substance is formed, whereas in physical change the substance may undergo a change in the physical state, shape, size or color, but it does not change into a new substance. Now let's go to the third question, that is neutralization reaction is a chemical change. Justify this statement with the help of an example. Okay, neutralization reaction is a chemical change. First, let's write the example. NaOH plus HCl gives us NaCl plus H2O. Neutralization reaction, remember, it gives us salt and water, and this is NaOH, that is sodium hydroxide, and this is hydrogen. I think this is a base, and this is a hydrochloric acid. And here we have got the sodium chloride as salt and H2O as water. In this example, NaOH is the base. NaOH is the base, and HCl is the acid. That forms a new substance. That is NaCl, that is salt, and H2O, that is completely a new substance. Water and salt are completely a new substance from base and acid. Okay, that's it's a chemical change. Now let's go to the fourth question. Define a decomposition reaction and give an example of the same. Decomposition reaction. What is decomposition reaction? From one reactant we will form two or more product. A chemical reaction in which in which more than one product is obtained from a single reactant is called a decomposition reaction. Let's see the example. 2H2O, that is water. When electric current is there, then it will form 2H2O2 plus O2. Now let's go to the fifth question. Classify the following reactions into different types, giving reason. Okay, so let's see the first one. CaO plus CaSiO2 gives us CaSiO3. So here we have got this one, and it gives us this. So what will this equation is called? Combination reaction, because two reactants are combined to form one product. So because two substances are combined to form one product. Okay, the second one, KOH, that is aqueous solution, plus HCl, that is aqueous solution, that gives us KCl plus H2O. So this is a neutralization reaction because KOH is a base and HCl, that is hydrochloric acid, and KCl is potassium chloride, potassium and chloride. Yes. So it is a salt, and H2O is water. So it's a neutralization reaction because the acid and base are combined to form salt and water. Then Cu, that is copper, plus 2 atoms of silver and 6 atoms of NO. So NO, I think, let's see what was NO. If it's written, then we will focus on that. Yes, NO3. NO. So what is NO? Okay, so it must be cancelled. NO means nitrate. Okay, so NO3, yes, NO3 is there also. Then Cu, NO3 2 Aq plus 2 Ag. So it's a displacement reaction because here we have copper. Sorry, again. So right, here we have copper and we have 2 atoms of silver and NO3. So now it's formed CuNO3 2. Okay, so now it's formed. Now copper is now this silver is displaced from this aqueous solution. Okay, from this aqueous solution the silver is displaced. Now it's forming like this. Then the 2 Ag, the 2 atoms of silver, will remain a solid. Okay,
It's a displacement reaction because one element is displaced in a compound. Now let's see the last bit, BaCO3. If heated, then BaO plus CO2. So CO3, so we have CO3 carbonate. Okay, so carbonate, when it is heated, this is heated, it gives us BO, oxygen, oxide, and that's solid, and also gives us CO2, that is a gas. Okay, so it's a decomposition reaction because more than one product is obtained from a single reactant. More than one product is obtained from a single reactant. This is the reactant. Okay, so successfully we have completed this chapter. If you want to see more videos like this, then like my video and subscribe to my channel and turn on the notification bell to get updated when I upload a new video. Thank you.